last time. Exercise 1.3. Prove that root 5 is irrational. Let root 5 is rational. Root 5 is equal to a upon b. A and b are co-prime integer. A is इक्वल टू रूट 5b. इसका मैंने इधर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर हो जाएगा a स्क्वायर और रूट 5 का रूट 5 से स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 5 और b का होल स्क्वायर b स्क्वायर। और इसको हम लोग मान लेंगे पहला इक्वेशन। 5 डिवाइड्स a स्क्वायर बाई थ्योरम 1.3। इफ 5 divides a square, so 5 divides a। इसको हम लोग मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। a is equal to 5c। a is equal to 5c, put in first 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर और 25 5 का स्क्वायर 25 स्क्वायर c का c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। 5 से 25 कटेगा तो आएगा 5c स्क्वायर। सो 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स b। इसको मान लेंगे हम लोग थर्ड इक्वेशन। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड 5 डिवाइड्स बोथ a and b, so a and b are not co-prime, so our assumption was wrong. Therefore root 5 is irrational. Question number 2. Prove that 3 plus 2 root is 5. 3 plus 2 under root 5 is irrational. Let 3 plus 2 root 5 is rational. 3 plus 2 root 5 is equal to a upon b. A and b are co-prime integer. 2 under root 5 is equal to a by b minus 3. 2 under root 5 is equal to b upon a minus 3b. फिर अंडर रूट 5 इज इक्वल टू, ये 2 नीचे जाएगा कि मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा a माइनस 3b अपॉन 2b। देयरफॉर a माइनस 3b अपॉन 2b इज रैशनल। देयरफॉर रूट 5 इज रैशनल क्योंकि वो बराबर में है। It contradicts our fact that root 5 is irrational. So our assumption was wrong.
is wrong. Therefore 3 plus 2 under root 5 is irrational. Question number 3. Prove that the following are irrational. First, 1 upon under root 2. Let 1 upon under root 2 is rational. तो पहले हम इसका रैशनलाइज करेंगे. 1 upon under root 2 into under root 2 upon under root 2 is equal to under root 2 upon 2 is equal to a upon b. A and b are co-prime integer. फिर हो जाएगा अंडर रूट 2b इज इक्वल टू 2a. फिर a नीचे जाएगा तो रूट 2b अपॉन b नीचे ले जाएगा तो 2a अपॉन b. Therefore 2a upon b is rational. Therefore root 2 is rational. It contradicts our fact that root 2 is irrational by theorem 1.4. Irrational, therefore so our assumption was wrong. Therefore 1 upon under root 2 is irrational. Question number 3, second part. 7 under root 5. Let 7 under root 5 is rational. 7 under root 5 is equal to a upon b. A and b are co-prime integer. फिर हो जाएगा अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन 7b. हो जाएगा a and b are co-prime integer. Therefore a upon 7b is rational. Therefore root 5 is rational. It contradicts our fact that root 5 is irrational. So our assumption was wrong. Therefore 7 under root 5 is irrational. Question number 3, the third part. 6 plus under root 2. Let 6 plus under root 2 is rational. 6 plus under root 2 is equal to a upon b. A and b are co-prime integer. Under root 2 is equal to a upon b minus 6. Under root 2 is equal to a minus 6b upon b. A and b are co-prime integer. Therefore a minus 6b upon b is rational. Therefore under root 2 is rational. It contradicts our fact that
under root 2 is irrational by theorem 1.4. So our assumption was wrong. Therefore, 6 plus under root 2 is irrational. Thank you. Please like, subscribe and share this video.